can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन, फुटबॉल ब्लडी हेल में आपका स्वागत है। आज ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट है यहाँ हमारे साथ, प्रणय। बट यू ऑल नो हिम थ्रू अ लॉट मोर बिगर नेम्स, जो वहाँ पे टीएफ भी लिखा है, टैकल फ्रॉम बिहाइंड। अनफॉर्चुनेटली मीम का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, एट द एक्सपेंस ऑफ यूनाइटेड फैंस, करेक्ट? United fans, I think Barca fans, I think list will go on. Spurs fans, मतलब ऐसे तो list will go on, and sometimes City also. Whenever those charges are brought up and Premier League, कभी भी ऐसे news आती है, so I think it's fair for all and everyone. ठीक है, हमको लगा मैनचेस्टर डर्बी है तो प्रीव्यू करना बनता है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप आए, अच्छा चांस मिला आपके साथ बात करने के लिए। बिकॉज सब बैंटर ऐसा है जो 2 मिनट साइड पे रखेंगे, ठीक है। सिटी हैज इक्लिप्स्ड एक्सपेक्टेशंस जब भी पेप आया था फॉर सिटी फैंस आल्सो, ठीक है। जो भी अचीव कर सकता था उसने अचीव किया है। नेक्स्ट ईयर तो वो भी निकल रहा है, राइट? बट बिफोर दैट एम होगा 4 इन अ रो, 1 मोर चैंपियंस लीग। ये स्क्वाड और चार्जेस सब छोड़ के व्हाट डू यू जेन्युइनली फील अबाउट सिटी एज अ सिटी फैन ये लास्ट अबाउट 10 साल अग्वेरो के टाइम से? I think पिछले decade को, I think I just saw the press conference of Pep Guardiola in which he mentioned कि यार first it was Liverpool, then United in the 90s, and the मतलब last decade has been of City. And again, ऐसे जरूरी नहीं कि हम continue ही करते रहेंगे. There will be always eras that will come and go. But I think अगर हम पिछले decade की बात करें, then if contradictory on the like Premier League में तो there has always been like पिछले 10 सालों में तो I think City has been only वो. Europe में I think this year maybe we will be able to do much. We already got that, एक होता है ना barrier, एक दिमाग से barrier हमने हटा दिया कि we made it into the first final, lost it, learned a lot of things. Were we unlucky in the past 5 years? As a fan, I would probably believe yes. But again, football is all about, finals are there to be won. So ठीक है, we won it last year, and in future also maybe we'll win. पिछले 10 सालों में अगर मैं बात करूं तो for City initially I think Mancini, since from the Mancini era अगर मैं बात करूं, there was always this intention कि यार if you ask me when I started following the club, my intention was nothing but I was like ठीक है यार, I'm just following the club. And then came the investments, a lot of transfers. Still people were writing us off. अगर मैं बात करूं, जब investments भी हुए तब भी everyone was like, you can never win anything. And I think पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ whatever the questions that were put up to City, like City and City fans, we have been just answering that. Can you win your can you win your first Premier League title? Yes, we can. Can you win 100 points? Can you get 100 points in a season? Yes, we can. Oh, but you can never win the Champions League. Okay, we won the Champions League. Can you win a treble? We won the treble. So I think for me, I think majorly it is just the club that has been answering the questions that have been put by the rival fans themselves, कि जो एक स्टैंडर्ड एक हर चीज का सेट कर रखा है। अब हम यूसीएल जीत गए हैं, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट oh, City has won the UCL, but you're not a European royalty. So maybe we will be in 5 years or 10 years. You never know. But yeah, I think that has been the journey so far. And again, as a City fan, I would nothing be but proud for whatever the achievements that we have done. Beyond expectations. जिस पे हमको जीतना अलग बात है कि you want your team to win everything, but actually जो हुआ, पेप जब ही आया to actually dominating to this extent, लिवरपूल ran you close, आपने जैसे बताया, right? बट फिर भी वो came it mostly, एक सीजन वो छोड़ के। तो is it fair to say कि ओवर अचीव हुआ है, कि you feel कि the way the squad is grown, reinvested in, कि it was bound to happen at a certain point? See, there are two aspects to it. If you ask me, in the Premier League, I think we have achieved what we wanted to. Overachieve last year, I think treble was the only thing. I mean, United did this. The only two clubs that have done in the England are Manchester clubs, right? So
उस मामले में ओवर अचीव तो कुछ मैं पानी में, मैनचेस्टर के पानी में कुछ अच्छा है, हाँ मतलब कुछ ना कुछ है, द पोर्ट ऑफ मैनचेस्टर, यस. सपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर। बट आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, लाइक अगर हम इंग्लिश लीग इंग्लैंड की बात करें, प्रीमियर लीग की बात करें, तो yes we have achieved a lot, but again we have an objective by the rival fans of that 20 word, so maybe in future we are trying to close that gap. But in Europe, if you specifically ask me, I think we have underachieved, because अगर आप पिछले 5 साल की सिटी का स्क्वाड उठा लो, एंड सारे, अगर मैं 18, 19, 20, 21 सीजन की, अगर द वे वी वर नॉक्ड आउट इन ऑल ऑफ दोस years, and like in especially in Champions League, because Champions League is the biggest, like it is, अगर आप चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे हो तो लोग आपको बड़ी टीम नहीं मानते, अब तो हम, क्योंकि हम जीत चुके, तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ, बट पीपल राइट यू ऑफ. लास्ट ईयर बिफोर द फाइनल कॉन्वर्सेशन थोड़ा अलग था. या 100, अब जीत गए तो अब बोल सकते हैं ना, सो पीपल कैन से ठीक है यार, ये अब बोल रहा है, हाँ भाई अब बोल सकते तो हम जीत गए ना. अगर लास्ट ईयर होते तो मे बी यू वुड हैव साउंडेड मी वेरी डिफरेंट, बट नाउ सिंस यू वन इट, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मोनाको के साथ अगेंस्ट जब हम हारे थे चैंपियंस लीग में इन द नॉकआउट स्टेजेस, दैट वाज ड्यू टू होम और अवे वाले गोल्स पे. देन दैट वेरी सॉल्टी एंड पेनफुल रहीम स्टर्लिंग ऑफसाइड. That was one of, I think that team was incredible. स्पर्स वाला जो एटलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में जो लिवरपूल वर्सेस ये हुआ था, स्पर्स वाला मैच हुआ था. I think we were probably in contention. We could have given tough fight, but again, kudos to Liverpool. They won it. उसके बाद चेल्सी वाला फाइनल, again, we were probably the better team, but again, Kai Havertz had a different plan. उसके बाद Real Madrid. So I would say in the Champions League in the past 5 years, yes, we have underachieved, because we should have at least gone for at least 1 or 2 titles. But last year अब हम जीत गए, तो yes. But specifically, if you ask me about Premier League, then yes, we are on track. That is what you expect out of City week in, week out. Haaland एक game पे गोल नहीं मारता, everyone calls him a fraud. So that is the standard that has been set, and we are pretty much, like, I am pretty much enjoying it. ठीक है. उससे हालैंड के आने से पहले I have never seen any player score in every goal. मतलब every game में आप किसी प्लेयर से गोल एक्सपेक्ट नहीं करते, and Haaland misses 1 or 2 sitters, मतलब like then people just write him off कि यार I think mostly तो हालैंड को जो गाली देते हैं वो तो अपने FPL वाले मेरे तरह, जिसे ट्रिपल कैप्टन किया, उसने 1 गोल दिया और बाद में साला FA कप में लूटन में 5 गोल मार रहा है, वो हमारे same bro. I captained Kevin De Bruyne, man, in the last game week. Triple captained him. He got benched, and then Luton के against, when I was also celebrating, but मैं दुखी भी था. मैंने कहा यार ये पिछले प्रीमियर लीग मैच में कर लेता तो फिर एटलीस्ट आई वुड हैव gotten some ranks, 1-2 million में ऊपर हो जाता, maybe in some contention then. So with City, I think the feeling is mutual, man. For everyone who's playing FPL, the feeling are very mutual. लेकिन तो भी ये साल पेप ने कम रोटेट किया है. दैट बीइंग सेड, एस्ट्रिक्स लगता है वो वापस चालू होने वाला है, बिकॉज कमिंग टू द डार्बी, ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड द माइंड गेम्स के केडी भी शायद नहीं खेलेगा, ऑल्दो ही इज प्लेड द होल एफए कप राउंड. कमिंग टू द डार्बी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसको पूरा 90 मिनट्स भी खेलने के लिए. आई मीन इट वाज कि मैंने कहा यार, मैंने जब मैंने ल्यूटन टाउन का ऐसे ल्यूटन टाउन वर्सेस सिटी का वो देखा, टीम शीट देखा, मैंने कहा यार इज दिस अ प्रीमियर लीग मैच दैट आई एम नॉट अवेयर, मतलब कब गेम है कि प्रीमियर लीग मैच है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ओटेगा एवरीवन वाज फ्रॉम द फर्स्ट टीम दैट वाज प्लेइंग. हालैंड डाल रहे हो व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, केविन डे ब्रुयना को तुम पूरा खिला रहे हो व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड. सो दैट वाज काइंड ऑफ वेरी सरप्राइजिंग, एंड sudden the fact that you are having a derby in 2 days, like 2-3 days of time, so that was very unexpected for me. मुझे वही लगा कि एक्चुअली मुझे फियर था ये मेरा कि पेप विल गिव हालैंड प्लेइंग टाइम, क्योंकि उसको चाहिए कि डार्बी के पहले ही हिट्स द गोल स्कोरिंग रन. ही गॉट चांसेस अगेंस्ट लूटन, वो देखा बर्न पहले वाले गेम में, व्हिच हैव गॉन ऑफ द कीपर एंड ऑल, बट समटाइम्स एज अ स्ट्राइकर तुमको वही चाहिए. एंड सैडली फॉर अस बिफोर द डार्बी इट लुक्स लाइक ही इज एट पीक फॉर्म विद केडीबी. तो वही डार्बी की बात करें तो लुक लास्ट 10 years जब भी लाइक व्हेनेवर यू स्टार्टेड फॉलोइंग राइट, तभी थोड़ा खौफ रहता था कि स्टिल यूनाइटेड है, वो 3-2 जीत जाएगा, गोल मारेंगे. अनफॉर्चुनेटली yes, I feel even in Manchester derby में थोड़ा form goes out the window, थोड़ा rivalry रहता है, but then there have been cases of the 4-1, 6-3 तो हुआ है right last 3 साल में ही.
कि we've tried to nick you all those 2-1 2-1 ऐसे nick किया है ओले के टाइम के we've got results against you, but for a United fan to say कि मुझे लगता है for us to be favorites हमको पूरा full strength squad चाहिए against full strength squad which is like competitive, ठीक है. हमारे पास हॉयलैंड तो वैसे भी नहीं है जो इन फॉर्म है. ब्रूनो गोइंग टू प्ले विद एन इंजरी, तो वहां पे एडवांटेज ऑलरेडी आ गया आपको. केडीबी हालांड फॉर यू हु आर आउट आर कमिंग बैक इन फॉर्म एंड कमिंग बैक फिट. फोर्डन को रेस्ट मिला मिडवीक. डोकू है आपके लिए. इज इट अ केस कि माय फियर इज कि दिस कुड बिकम अ राउट and I don't want it to be a rout. मेरा हार्ट कह रहा है कुछ भी नहीं करके the way United is when they get pressed against the when you get pressed against when the back is pressed against the wall, United has done well. Yeah. But do you fear a 3-2 loss going up 2-0 and United coming back? सच्ची पूछूं, what do you feel about this derby? I mean, for people who know me personally and on Twitter, whatever I predict, it's happening like completely opposite. मैं जो भी predict कर रहा हूँ भाई सब कुछ उल्टा जा रहा है. So I'm not gonna make it prediction, but I'm just gonna say कि there was a time when Alex said about it's good to see कि भाई City City are the favorites for this particular derby and for the every derby that is gonna come. But again, the recent developments, मतलब आगे की मैं बस यही बोलूंगा कि I think now since Sir Jim is there and we are seeing some movements happening, there is no doubt absolute कि भाई United is a big club, like you expect United to do good. They've बड़ा club है तो है भाई. And maybe in future, if the things are the only difference that has been in the past 10 years are the owners. मतलब owners के vision का ही has been the difference, if you ask me. क्योंकि where again मतलब United का तो अपना एक struggle चल ही रहा है, although like a very minor stake has been got by Jim, but he's still not in power, right? Like he's not in power right now to do a lot of things. Yes, he has whatever उसके हाथ में है वो कर रहा है, but it really depends on how they are trying to maybe in future how they structure themselves और क्या होता है. That is a separate thing and I think that is a United problem, so they should be discussing it. But for City I think the only way is मतलब अभी improvement का कोई वैसा नहीं है हमारे लिए. Our job is to only how we just need to maintain ourselves. I think for City जो भी हमने एक ecosystem बनाया है अपना जो भी स्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं CFG के थ्रू, एंड नाउ सिंस यू आर ऑल्सो अब हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी मतलब इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड, वी आर ऑल्सो नाउ हैविंग अ गुड रेंज ऑफ स्काउटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट. सो आई थिंक the only difference between United and City right now is of the owners. So it is just about by when can United catch up to City. It is just that question. But that being said, I am kind of positive for tomorrow. Not going to predict the scoreline, but I am positive. Hopefully, and one of the other reasons is also because United is not playing with their full. Just on if you see the two team sheets that are going to be tomorrow, United is not going to play with their full strength. Unlike City, we have got KDB returned back abhi recently. Feb he has got well dressed and he's been now in the assisting last wale goal mein, as we already spoke. Haaland को confidence मिल गया. There were some patches, yes, but I think we have a good team. And when you look at the two papers of the team sheet, I think City weighs a lot more than what United is putting up. With all due respect, I think United के भी अगर पूरी playing 11 होती तो maybe again it's a derby day, वो हो तो कुछ भी सकता है, but I would have given थोड़ा सा respect उस चीज को. But since I don't see the squad that much fit, your main striker is out. मतलब जो एक स्कोर कर रहा था जिसने अभी फॉर्म पकड़ी थी 3-4 गेम से, he is out. So I think for that reason, and we are playing at Etihad जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अभी अच्छा है. I mean I would probably say कि City is gonna win it tomorrow. आपने वो बहुत ही अच्छे तरह से स्ट्रक्चर किया. you're making it very hard for me to like hate on you या make banterful. इतना रिस्पेक्टफुली बोला कि basically United is garbage. नहीं, मस्ती कर रहा हूँ. मस्ती कर रहा हूँ. No, you're right. मेरा fear वही है. वरान और ब्रूनो जैसे मैंने बताया खेलेंगे भी तो clearly दिखा हमको against Nottingham दोनों half fit है. We couldn't keep Nottingham out. Like मर के ओरिगी को बाहर रखा है, तो हालांड वर्सेस वरान तो अलग ही बैटल रहने वाला है.
Lindelof, unfortunately, I think will be back on left back. Johnny Evans is Evans gonna will play. be alongside Varane. Dallo saving grace है, लेकिन Dallo, like I said, could be up against Doku. Doku, yeah. If No, not he's gonna Doku, be yeah, against Doku. Yeah. unless he pushes Foden left, he starts Bernardo on the right or KDB in the middle. तो मतलब और ही अलग ही इश्यू हो जाता है क्योंकि मिडफील्ड खुल जाता है वापस. So negativity is there in my mind. मुझे भी लगा कि जैसे आपने बताया, if Haaland रहता, what would be a fit combination? No, ठीक है, Bruno Haaland is plays. playing. I think Bruno is touch and go, I guess. मतलब see, I'll be Exactly. very honest. The अभी एक न्यूज आया था कल या परसों का कि Pep Guardiola has secretly admitted that Rashford is the only player that he would start for Man City, and that was utterly garbage, man. I mean, I was laughing. मैंने कहा, even if there is a player, then who can first make it into the City team and then start. I don't think so. It's going to be Rashford. Maybe a prime Bruno Fernandes would probably do in this United squad if I had to मतलब pick. Yeah. So I was actually वही करने वाला था. I think my next topic before I thought close करने के पहले we can talk about that. But it's interesting आपने mention किया because prime. So last season का देखे तो prime Bruno, prime Rashford. Rashford could have slotted in your left ना last season तो जो जैसे fire कर रहा था. सोच लो. No, man. Come on. No. Last season we won the treble, man. Every player who played in that position is. I understand. वो तो magic Yeah. touch रहता है. But ठीक है. Are you telling me if you had permanently to choose between Grealish, who was playing last year in and out, versus Rashford, you take Grealish every time? Yeah, man. Last season, Grealish, the way he stepped up, yes, 100%. And this season, we have been missing that Grealish. Last season, I think that was. I would not say that he was in his. ऐसा नहीं कि 100 million का वसूल. People might debate अब जहाँ पे पैसे का cost आ जाता है. No, maybe he's around 40 million का उसने दिया. But I think he did whatever that was required out of him. And that is what you need at City. A player to just do his job. We don't expect, अगर तुम ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, that is your individual capacity कि भाई वो player बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. But I think if you're doing the job, if you're just doing the gaffer's job, you are there, and I don't think so anyone else can replace him. Last season, like every play, we won the treble, man. So Interesting. I mean, अरे वो तो मालूम है भाई. Treble 100%. देखो वहाँ पे भी contribution बहुत credit जाता है the way Haaland integrated to the squad. ठीक है, उसने वो गोल तो मारे ही, but the way you all try to play around him also in general, Pep ने for a change overthink नहीं किया, एक set system से खेला, right? I just feel कि honestly बोलने जाए तो I feel it's harsh कि you would say you not consider this season. कोई भी तो मैं भी बोलूंगा ले लो रैशफोर्ड को. वो तो अलग टॉपिक है. इन द लॉन्ग रन आई वुड स्टिल से रैशफोर्ड को दे दो एक सीजन दे दो उसको हमारे साथ, या 100 मिलियन दे दो कोई, होपफुली वैसे ही है. लेकिन लास्ट सीजन इफ यू आर टू आस्क मी यार, जो 2-1 विन भी था, राइट, व्हिच वी गॉट, वो रैशफोर्ड का जो गोल था उसके पहले, वो द गोल ही स्कोर्ड, ही जस्ट क्रिएट्स अ पॉकेट ऑफ स्पेस. उसके पास पोटेंशियल तो है. एंड आई वुड से इफ यू आर कंपेयरिंग फोर्डन वर्सेस रैशफोर्ड तो समझ सकता हूं. फोर्डन के पास ज्यादा पेस है, ज्यादा connectivity, ज़्यादा link up Foden is a generational talent, man. He's a generational. So I understand talent. 2 years back I would have said Rashford is better than Foden the way he was developing. But abhi maybe 2-3 years back, yes. Maybe 2-3 years. See, I mean, Rashford 2-3 years ago when he was into, I would say कि prime Rashford, तो yes, I'm not removing prime Rashford. मतलब prime Rashford, the way he used to make runs, वो he's a baller, like मतलब था, लेकिन अभी नहीं. और पिछले सीजन में तो यार अगेन इट इज अगेंस्ट माय ओपिनियन वर्सेस योर्स. आई वुड probably not want to pick any player. Like I think the 11 players who field, मतलब मैं तो किसी भी प्लेयर को और नहीं लूंगा. द सिटी मतलब you find me salty or whatever you want to call it. I would not pick any other player. I think the 11 players that played for Man City in the final and the entire team, of course, that is the best team. Like I would not pick any other player out of, चाहे किसी भी टॉप क्लब का पिछले सीजन आप परफॉर्मेंस ले लो, नॉट इवन हैरी केन, नॉट इवन एनीवन. आई थिंक एवरी प्लेयर हु वाज दैट इन दैट पोजीशन, यस. उसके पिछले सीजन में यस, आई वुड प्रोबब्ली पिक सम अदर प्लेयर्स. आई वुड पिक सम रियल मैड्रिड प्लेयर्स बिकॉज़ वी डिडंट विन द चैंपियंस लीग. बट पिछले सीजन तो यार ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट गाइस, रिस्पेक्ट. नहीं रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं तो. थोड़ा ट्राइंग टू गेट द इनकन्वीनिएंट आंसर आउट ऑफ यू. सच बोला जाए तो लुक एज
United fan के perspective से realistically this year also in general over the last 3 years, अभी मैं वो नहीं बोलूंगा दे कैसेमिरो वरान है, they are not peak Casemiro, peak Varane, ठीक है, but Bruno, I see Bruno as a player who should walk into the City side still. I understand कि तुम लोग का balance है, लेकिन the way I believe जो Bruno has struggled to create chances for our players, जहाँ पे our players are adjusting to him, वो जो players वो हालांड के लिए create करता, for example, if you don't have a KD, I agree वो to this. success I rate is 100% agree. But respectfully, I can't say कि any of our keepers, Onana तो अभी ये साल अलग ही बात है, तो बहुत सारे लोग, see, I'll tell you one thing, a lot of I think अभी एक शायद में एक न्यूज़ भी आई थी कि Bruno Fernandes is probably the most hated player in the Premier League right now. मतलब अब मेरे को नहीं पता किसने करा था, बट भाई twitter.com पे मैंने देखा था कि भाई Bruno Fernandes has been rated. अब मेरे को नहीं पता उसमें कितना सच है नहीं है, but there has been so much negative thing around Bruno Fernandes. But I honestly as a player love him because his passion toward I first thing is see I in a player is passion. Every time he's in the pitch, United is winning, losing, he's the one who's giving out his 100% for the fans. He's the one who's going out. He's the one who's still making tackles. चाहे 3-1 हार रही हो United, चाहे जीत रही हो 3-1, it doesn't matter to him. He's always, his commitment towards the club is immense. So that is something that I admire the most about him. अगर कोई player चाहे वो कैसा भी खेलता हो, अच्छा खेले खराब खेले, that is a different thing. कोई players अच्छा खेल लेते हैं, कोई अपनी परफॉर्मेंस को और भी पीक कर देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एज अ प्लेयर, द वे ही represents the club, I think that is something that I really admire him. And I think even for if you want to put him player wise, be the chances that he creates, the passes from the byline and everything, that is kind of I really like him for that. And plus अगर सिटी में होता तो काफी सारे सेट पीसेस भी जीता, which I think Guardiola might have admired. तो maybe if you want to just call it that way, तो yes. Fair enough. मेरे लिए एक ही चीज है कि looking at the players we spoke about, looking at a starting lineup जो expected है, I think to get कुछ भी as a result for us, I think to get any kind of result, I think ये टेना का 100 गेम है यूनाइटेड के लिए. Okay. Maybe we can sneak in a 2-1, but I think I'm being very optimistic. Like मुझे all jokes aside, this is United का fan channel, like MUFC है मुंबई का fan channel है, right? I'm supposed to get our fans to be looking forward to it. So I'm just say positivity wise एक चीज बोल सकता हूँ कि last 10 गेम में I think हमने सिर्फ 4 बार हराया आपको, 3 बार है I think. Those have been close games, but okay, we've got it. Like we've tried to structure ourselves in a way where we've taken form out of the equation. जो अभी है, हम लोग का decent form था, but last 2 games have been a scrape. Fulham and Nottingham तो just we got over the line. City का form थोड़ा off था, December kept pace up, ठीक है. I feel, and I want to get your point on this, ठीक है. Do you feel if where can City lose the game? Where is the one way you think City can lose the game? I think if we concede an early goal, if we concede an early goal or goals maybe, because I think first 15-20 minutes will set the tempo. That is the only possibility that I feel, क्योंकि City को थोड़ा सा struggle होता है कि whenever because City is not used to getting pressured situation में, हमें आदत नहीं है, players को उतनी आदत नहीं है. They're like हाँ पहला गोल मार दिया फिर 3-4 और मार दो, it is like that. But when you're a goal down, that is how, that really depends, आपकी mentality show करता है कि how, but that is the problem with us. वो situation हमारे साथ ज़्यादा होती नहीं है वो, that is very unlike of City. So the only way that I feel City might lose to United is if we concede early goal. So we got to stop that. I think पहले से ही अपना डिफेंस एकदम टाइट रखो, मेक श्योर यू कीप इट टाइट, यू कीप इट सेफ, स्कोर द फर्स्ट गोल फर्स्ट एंड देन टेक द गेम. मतलब पहला गोल तुम ही मारो, दैट शुड whoever scores. मेरा वो इनवर्स है. इनफैक्ट ये मैंने नोटिस किया सालों से, व्हेन यूनाइटेड स्कोर दैट अर्ली गोल स्कोर करते हैं ना, थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं.
तो मेरे लिए एक ही है कि Hmm. हाँ पहले 15 मिनट में गेम जैसे जाता है नॉर्मली विल डिक्टेट द कोर्स ऑफ द गेम, बट अगर जो हम 15-20 मिनट कंसीड नहीं करते हैं और पहला गोल मारते हैं अराउंड मिडल ऑफ फर्स्ट हाफ, आई थिंक दैट इज द ओनली वे हम लोग सस्टेन करके थोड़ा जीत सकते हैं. लुक हार्ट इज और सेइंग यार मे 2-1 निकाल सकते हैं और एक, बट हेड इज सेइंग कि यार 3-1 4-1 खा सकते हैं बहुत ही बुरा. एंड एज अ साइन कि द वे यू बीन टेलिंग अस कि सिटी का स्ट्रक्चर, expectations, players yeah. drop off hurts, but the fact that we've pinched Omar Berrada from you is a sign of indirect respect to y'all. कि जो आपने सेटअप किया है वो हम लोग को करना है, means the guy behind that has done a good job. So we Yeah, are in yeah. the right direction, but I feel in the short run the only way we can win such games is just on the manager to affect the squad, to lead up, charge up the players. कि बॉस मैनचेस्टर डार्बी है, तुम लोग रहने दो, जो होसे ने किया था. डोंट लेट सिटी विन द टाइटल विद यू अगेंस्ट यू, राइट? वहां पे पॉगबा ने आके Hmm. 2 गोल मारे थे और स्मॉलिंग ने. I think, but that is where we've come and won against City. It's come down to Ole Gunnar Solskjaer motivating it. So I feel tomorrow Ten Hag has to have his best audition of his life or best motivational speech. अगर जो करता है ना कल, तो चांस है. बट दैट बीइंग सेड 4-1 खाएंगे तो भी कुछ डाउट नहीं रहेगा कि हाँ ठीक है You know, हार गए. when you're talking about it, मेरे को पता है एक और position और लग रही है, and I'll come to another point. मेरे को यही लग रहा है कि now since you mentioned about it, maybe I think if United try to frustrate City for like 70 minutes or 75 minutes कि भाई तुम frustrate ही कर दो एकदम City को, that is another possibility that because then City will be like furious कि यार, because for us we have to win all the games, because for us we have to राइट. win the title, we have to win the title. तो draw तो anyways we are not going for any games for a draw, हम draw के लिए तो जाते ही नहीं किसी game के लिए. तो आई थिंक दैट माइट बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जहाँ पे यूनाइटेड माइट हैव एन एज कि भाई अगर तुमने 60-70 मिनट सिटी को एकदम ही डीप तुमने अपना कर रखा है, एकदम तुम एकदम ही हराम बॉल पे चले गए हो कि भाई तुम फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, लेट सिटी हैव द बॉल बट you're नॉट लीविंग दो स्पेसेस, देन देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटी फॉर, क्योंकि वी विल बी ऑल आउट ऑन अटैक, मतलब अपन तो राइट. बॉल पूरा रखेंगे, प्रेसिंग रखेंगे. You will see it probably in the 3rd or 4th minute that City is constantly आगे press कर रही है. But I think again for United counter attack अगर वो करती है, that is the only मैं वही possibility. बोलने वाला था. आर Yeah, ओनली वे हम स्ट्रक्चर, लेट्स नॉट फॉरगेट अवे हमारे लिए इट्स एट एतिहाद. yeah, द वे यूनाइटेड सेट्स अप एट एतिहाद कभी कभी थोड़ा नेगेटिव रहता है, बट आई फील इंस्टेड ऑफ दिस टाइम ऑप्शन नहीं रहा. कैसेमीरो खेलेगा थोड़ा पेस का. आई थिंक कैसेमीरो विल नीड अ हिप पेयरिंग, मतलब वो उसको सील करना पड़ेगा वो जगह. तो मोमेंट टू डबल बैक, वहां पे आप डबल टीम करते हो तो ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव प्लेयर कम हो जाएगा आगे. तो आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ा डीप खेलेंगे स्टार्ट में. अगर जो नाइवली आई फील हम लोग पूरा गेम लेके जाते कि छोड़ो हमको क्या करना है, वैसे भी हारने वाले का है, प्रेडिक्शन इज वी आर गोइंग टू लूज, लेट्स ग्रैब द गेम एंड स्टफ ऑफ द नेक. एक तो आई बी वेरी शॉक्ड एंड बी आई बी वेरी स्कैर्ड, क्योंकि आई डोंट थिंक वो जो हुआ था टेना के पहले डार्बी में 6-3, आई थिंक टेनैक सेट आउट की नहीं मैं मेरा स्टाइल खेलूंगा, डार्बी है, लेट्स होप की द फैंस एंड द मोमेंट कैरीज अस थ्रू. और वी एट एब्सोल्यूट क्रैप, जहाँ पे मुझे मालूम है कि आपने ऑलमोस्ट स्टार्टेड 6 अटैकर्स या 5 अटैकर और 1 फील्डर. आई थिंक केडी भी खेल रहा था पीछे. yeah, deep. और या उस सो आई मैच डोंट, की एक और बात थी कि वो लास्ट के 2 गोल भी हमने दे दिए थे. इट शुड हैव बीन अगेन 6-1, बट वो लास्ट के 2 गोल भी दे दिए जो हमने खाए. इट वाज ऑल या कि भाई सिटी बिकॉज ने बॉल, वी हो ही लिटरली गया लेफ्ट है. द बॉल. करेक्ट, बिकॉज एंड दैट इज वेयर आई फील कि थोड़ा फॉर्म को रखे तो ऐसे सेटअप करेंगे. एंड आई डोंट माइंड कि ये डिफेंसिव सेटअप रहेगा, थोड़ा ऑप्शन नहीं है वो अलग ही बात है. अगर जो हॉयलैंड भी फिट होता और ऐसे लीचा रहता तो मैक्स टू मैक्स कैसेमीरो के साथ वी कुड हैव प्लेड ब्रूनो बिहाइंड मैक्टोमिनी आगे, नहीं ना. तो वही सेटअप तभी नहीं होता जब जो सेटअप है वो है. तो आई फील विद दिस एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीक, मे बी रैशफोर्ड ने अभी इंटरव्यू दिया है. आई डोंट नो, अभी इंटरव्यू देने के बाद मैंने मेरे वीडियो बनाया था, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि जितना कम बोले उस पर कमी है. प्लीज आई जस्ट फील कि पिच पे वो कमेंट अपना कमिटमेंट दिखाए और कुछ नहीं. एंड नो बेटर टाइम देन बिफोर अ मैनचेस्टर डार्बी, राइट? के प्रूव इट ऑन द पिच. So that's Yeah. what my hope is कि as a player, as a unit, Abhi, we fight for United the fans badge. have also turned. United fans, I think a lot of United fans have turned, back against Rashford. So सारे 7 खून माफ हो जाएंगे. अगर 7 खून भी करता तो वो माफ हो जाते अगर
डार्बी वाले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दो तो, एंड पीपल आर वही गोना सिंग विनर यू, आ गया तो सही बात है। बराबर पीपल आर गोना बराबर है। सिंग यू अबाउट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्ली 3-4 months। वो पॉगबा वाले विनर की भी आज भी लोग बात ही करते हैं, उसका एक ही अच्छा काम किया उसने यूनाइटेड में, कि उसने वो बचा लिया भाई इज्जत की टाइटल। अगर हम उस दिन जीत जाते तो वी वुड हैव उस चीज के बारे में गाते, बट वो पॉगबा ने एक अलग ही अच्छा काम चुपता करा था, आपने। हाँ बिल्कुल वो वो अलग अलग चुप ही था। चुपता था। मतलब इट्स नॉट लाइक वी डोंट हैव अ मेमोरी ऑफ अग्वेरो टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ, बट वो वाला वो एक्स्ट्रा रहता था। एंड या बिफोर वी लीव, थोड़ा मुझे पूछना ही है बैंटर करके ही, देखा आपको तारीफ तो किया है, लेकिन जेन्युइनली मेरा एक ओपिनियन है कि क्या फुटबॉल फैंस, नॉट जस्ट ऑफ सिटी, ऑफ एनी क्लब, अभी फ्यूचर में जो भी होता है वो जीतने के बाद, कप जीतने के बाद 10 साल के बाद आर्बिट्रेशन में क्लब चला गया, एफएफपी आ गया, फैंस की गलती तो नहीं है। फैंस हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, एवरी राइट टू टॉन्ट, एवरी राइट टू से व्हाट वी से। या यूनाइटेड फैन हूँ बॉस, मैंने 20 साल से बहुत खींचा है तो मैं खा रहा हूँ अभी। आई कैन एक्सेप्ट इट, आई हेट इट, आई स्टिल गिव शिट बैक। आई डोंट नो विद व्हाट कॉन्फिडेंस कि मैं बोलता हूँ सामने, बट नहीं बोलना चाहिए, बट देता हूँ। व्हाट डू यू जेन्युइनली फील अबाउट 115 एक्चुअली बोलने जाए तो? वुड इट देयर आर टेंट योर टू थिंग्स। मेमोरी अ लिटिल बिट, वुड इट सावर थिंग्स फॉर यू? क्योंकि थोड़ा तो लग रहा है अभी विद व्हाट दे डन विद एवर्टन, बिकॉज वेरी 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 फ्यू चांसेस अक्रॉस लीग्स जब एफएफपी हुआ है किसी लीग ने इतना उनको कम कर दिया है पॉइंट्स। तो डू यू फील दे वांट टू बी लेस हार्श टू सिटी, इसलिए वो लोग ने किया है? See, there are two aspects to it. One is, again, whatever we have won, you cannot take the memories away, right? मतलब जो हमने जीता है वो हमने जीता है। अब उसके बाद किसी को क्या बोलना है, whatever they want to say about it, you cannot take away the memories that I in the last 10 years that I've seen with the club, and those are very beautiful for me. So मेरे लिए वो memories, firstly I think for the memory wise, I don't really care। हाँ, राइवल फैंस को शायद एक मौका मिल जाएगा इस चीज के बारे में बोलने के लिए, एंड दे मतलब उनके पास तो अभी भी है ही, मतलब अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ, बट दे एनीवेज थिंक दैट भाई कि यही है, मतलब 115 ही है, ऑल्दो देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर सेट टू बी डन, एंड जो भी है। राइट। सेकेंडली आई विल से कि जो भी डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग, सो वी डोंट नो द डिसीजन, एंड अगर गलत किया है, अगर, एंड आई विल से, एंड आई हैव सेड इट, मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत किया है, अगर हम रेलीगेट भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नो सिटी विल प्ले इन सेकंड डिवीजन एंड ऑल ऑफ दैट। फॉर मी आई रियली डोंट केयर, मे बी ठीक है, आई स्टिल सपोर्ट माई क्लब, मतलब मैं तो सिटी को तब भी सपोर्ट करूंगा, आई वॉच देम इन चैंपियनशिप, आई वॉच इन डिवीजन। अगर गलत किया है तो देर विल बी पनिशमेंट, इट्स फाइन, बट जस्ट फॉर वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, द पीपल हु स्टिल क्लेम कि भाई हाँ सिटी ने ये भी करा है, योर क्लब इज ऑल्सो नॉट क्लीन। आई वुड जस्ट ऑल्सो पुट इट लाइक दैट वे, कि अगर हर चीज वी डोंट, मतलब आप एक चीज को देख के बोल रहे हो कि हाँ हाँ ये चीज गलत है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन योर क्लब हैज डन, तो इट डजंट रियली मेक, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई सेंट बना रहा है उस चीज पे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ शेडी थिंग्स दैट हैपन ऑन द साइड बाय साइड। तो जस्ट बाय सेइंग कि भाई सिटी ने गलत करा है, हम तो एकदम क्लीन है, हमने कुछ नहीं करा, दैट इज वेयर यूर मिस्टेकन, एंड इफ वी आर पनिश्ड देन यू विल बी पनिश्ड एज वेल। मतलब भाई तुम भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे हैं, एवरीवन इज हियर, तो सिंपल सा फंडा है उसका। तो आई ये माय थोड़ा टॉन्ट, जो चैट में चेल्सी फैंस आएंगे बाद में उनके लिए टॉन्ट है ना, थोड़ा चेल्सी है, बारसा है, I यूएफा का mean, that's फैन what, आएगा I'm तो। not going to name the clubs. I'm not going to name the clubs. I'm just मैं saying बोल रहा कि हूँ, आई एम नॉट पुटिंग इन हिज माउथ, इसके ऊपर पीछे मत जाना, मेरे को बोल दो गाली, ठीक है? बारसा है, चेल्सी है, नहीं, इमीडिएट फायरिंग लाइन I'm है। just saying कि नाम वाइज भी, मतलब a lot of clubs have done a lot of shit, तो ऐसा नहीं है राइट। कि सिर्फ सिटी ने करा है। The reason why City is being picked up because हमने जीत कुछ ज्यादा लिया है, तो everyone's gonna pick, अब तुम विनर को ही पिक करके देखोगे ना। अब एवर्टन का nobody gives a care, nobody gives a fuck about एवर्टन, कि भाई एवर्टन को 10 पॉइंट का, अभी 6 पॉइंट का हो गया उनका, बट नोबडी इज नॉट रियली कि अरे नहीं एवर्टन ने तो यही करा है, एवर्टन ने तो रेलीगेशन सरवाइव करा बेचारों ने अभी, उनका जो भी है, बट यू गोना पिक आउट, सो ये चीज है। So that is आई that फील is what I believe about FFP. But I think honestly, I feel चाहे जो भी रिजल्ट हो, एंड दिस अगेन आई विल नॉट से इट इन बैंटर और एनीवाइज, चाहे हम क्लीन भी प्रूव हो जाए, चाहे हम गिल्टी भी प्रूव हो जाए, आई थिंक राइवल फैंस विल ऑलवेज ट्राई टू स्टिक इट इनटू आवर एस कि भाई नहीं ये चीज ऐसे है, चाहे हम क्लीन। माय क्वेश्चन इज जस्ट दैट, अगर हम कल को प्रीमियर लीग चार्जेस से अगर हम क्लीन भी हो जाएंगे ना, कि प्रीमियर लीग बोलता है कि नो वी वोंट कंटिन्यू इट फर्दर,
I don't know if that will happen or not. Whatever, like चल रहा है जो भी backstage पे, I don't know here in दिल्ली ना बैठ के कि वहाँ पे ऑफिस में क्या चल रहा है. बट अगर वो क्लीन भी होता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइवल फैंस विल स्टिल टॉन्ट अस कि नहीं 115 तुमने पैसे खिलाए. और अगर प्रूव होता है तो तुम फिर उस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करोगे कि नहीं यार ये तो देखो ऐसे ऐसे प्रूव हो गया है. सो पीपल आर गोना से व्हाटएवर दे वांट टू से. We are playing good football. That is what all matters to me. Every week in and week out, we are going as favorites to win every game, every competition, and I am happy about it. And I hopefully think it you is just going to continue. gave every rival fan का Twitter toolkit कि क्या क्या बोलने वाला है, मैं सब चीज के लिए prepared हूँ. ये आ जाएगा, ये मेरा तरीका तैयार है. That is वो तो वैसे भी बोलेंगे यार. मतलब उस मेरे बोलने से ये चीज में जो मैं बता रहा हूँ वो भी ट्विटर पे ही सारी बीफ होती है इन सब चीजों की. तो आई एम ऑल यूज्ड टू इट एज अ सिटी फैन. दिस इज प्रॉब्ली ऐसा मोमेंट है ना कि एनीवन कैन कम एंड पिक आउट ऑन एनीथिंग. मतलब चाहे तुम जीतो हारो, हालैंड एक गेम में मिस करे, केविन डी ब्रुयना सिटर मिस करे, तो यू नो द क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर फॉर अस. सो आई एम यूज्ड टू इट एंड I'm just there. मेरे को और फर्क नहीं पड़ता चीजों से. As a rival fan, I hope this works out in my favor. As a content creator, only but massive respect for you. ठीक है, because all the hard work that you put in, I watched your videos, so I don't need to know anymore. I have seen exactly the way you've grown. You've spoken about your journey. Indian football के बारे में अभी आप Indian football में काम कर रहे हैं. You've beaten a lot of trolls. You've beaten a lot of negativity, and you've done it on your own. So all the respect for that. बट फिर भी एक लास्ट बात पे बिफोर वी से बाय थोड़ा छेड़ना पड़ेगा. अग्वेरो और वेन रूनी, आई कांट लीव यू. सच Bro, अग्वेरो. pre 2010 Wayne Rooney, of course, because Aguero came in 2011. But I'll be मैं honestly बोलता हूँ, like I've like when I was growing up, there were two players. My journey for watching football is of FIFA 6. So the FIFA 6 के दो कवर में थे भाई, Rooney and Ronaldinho, two of the goats that I utmost. मतलब Ronaldinho तो मेरे लिए has been the goat, like he's the goat for me. लोग मेरे से मेसी रोनाल्डो पूछते हैं, मेरा जवाब रोनाल्डिनियो रहता है. And for so I come from that kind of an time कि भाई मैं FIFA 2005-2006 से मैंने start किया था. So Rooney, again, I have a level of respect, but as a fan, there will be, it is a very biased answer. I'm gonna obviously say Sergio Aguero for what he has done, and you know, like पिछले 10 साल में he's been the best striker. I think even for, and अगर Premier League में भी अगर मैं बात करूँ, I think the way the end part of Rooney was not handled very well. This is something I personally believe. Again, United fans can have their own opinion about it, and you know, you can have another conversation about it. I just feel the end part of Rooney in United, we should have given him, probably the club should have given him more respect. मतलब वो एक और respect से जाना चाहिए था. But I mean, we did our best in terms of Sergio Aguero. So personally, I would say Aguero, but yeah, I think मतलब it is just on a very biased basis पे मैं इसका जवाब दूंगा कि भाई Sergio Aguero. fair. I feel कि यार एक ही चीज है. I feel Rooney's exit was not the best, क्योंकि मुझे लगा कि फर्ग्यूसन जब वैन पर्सी को लेके यार उसको कैप्टनसी दिया, वो एक साइन था रूनी को कि आई डोंट ट्रस्ट यू, तू लॉन्ग टर्म देखो रहना है या तेरा गेम में स्टिल दिमाग है. क्योंकि रूनी वाज समवन हु वाज ऑलवेज पार्टिंग ऑफ द पिच ज्यादा थोड़ा. ही लाइक्ड एंजॉयिंग लाइफ, राइट. तो आई फील वही इशू था कि विच इज व्हाई रूनी जब भी मॉयस के टाइम पे भी आया, यू सॉ कि थोड़ा ही वाज ट्राइंग फॉर द क्लब, बट उसको भी रियलाइज हुआ कि ही इज नॉट फुल्ली देयर एंड नीदर इज द टीम फुल्ली देयर. एंड जब वो एवर्टन गया, हिज डिक्लाइन वाज इमीडिएट. But I could say one thing to you कि Pep Guardiola did not like Aguero that much. उसको चाहिए था कि Aguero को कम खिला के अपना टीम स्ट्रक्चर करे. Don't you feel that Pep Guardiola wasn't the most fair? And every time he started Aguero from the bench also ना, Aguero ने उसको गोल मार के चुप करा दिया. Yeah. Even in the last match में भी he put a carnage. जो उसका last match था, he came on for like last 30 minutes or what. But I think even but गार्डियोला का तो देखो अलग ही सीन है. वो तो मतलब फॉर गार्डियोला आई थिंक ज़्लाटान के उसका वो हेट है अपने स्ट्राइकर्स के साथ, उसको थोड़ा दिक्कत रहता है. या बट स्टिल वी वर एबल टू गिव अ प्रॉपर फेयरवेल टू अग्वेरो. आई एम हैप्पी अबाउट इट कि भाई क्लब लेजेंड है तो उसको रिस्पेक्ट के साथ हमने यू नो भेजा. ऑल्दो लाइक देन ही मूव टू बार्सा एंड
whatever the situation happened, but he was kind of done from City. Like उसने पहले ही बोल दिया था कि मेरा last season है and I'll be off. So yeah. Are you captaining Haaland tomorrow? Bro, like honestly FPL wise तो जिसको भी मैं कर रहा हूँ ना, everything is going probably at the wrong end. But maybe let's see. I think कल ही मैं decide करता हूँ. अभी तो मेरा captain for now, as for what we are recording right now, I've captained Erling Haaland just because of the Luton form. And थोड़ा हालैंड का थोड़ा पर्सनल ग्रज भी है यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो थोड़ा एक पर्सनल मोटिवेटर होगा. एल्फी विल बी इन द स्टैंड्स. निकाल दिया पहले गेम में, तो निकाल दिया. Alfie will be in the stand, so maybe let's see. And yeah, for now it is Haaland, but again I'll decide it just 5-10 minutes prior. वैसे तो और कोई फिक्चर है नहीं, but हाँ, most likely that Haaland will be. मेरा भी डेडलाइन स्ट्रीम के टाइम ही डिसाइड करूंगा, बट आई फील कि हालैंड या वॉटकिंस के बीच में 50-50 अभी. Yeah, I think Watkins is a good shout. Yeah, Watkins is a good shout. Lad's been scoring a lot of goals under Emery. Perfect. Thank you so much for joining us. आपने 20 minutes का commitment दिया था. You stayed double the time. I'm very happy that you're here. Hopefully future में we can talk a little bit more FPL stuff and elsewhere. ठीक है? Thank you again. Sure, bro. And hopefully we get to take one league title off you with the charges. Let's see. Chalo, see you. Bye-bye.